Sejananam. Students, our today's topic is random forest for classification and regression. Now, coming up to introductory part, random forest is actually a classifier जो n numbers of decision tree को carry करता है. This random forest classification stuff is scanning out various subset in the given data set. अब डेटा सेट कुछ भी हो सकता है, your Excel sheet, your data in the form of image or videos. It takes the average to improve the predictive accuracy of your data set. Random forest is one of the popular machine learning algorithm which is comes under supervised learning technique, जहाँ पे हम लेबल डेटा सेट के साथ डील करते हैं. Random forest can be used in both the regression and classification problems. जब आप objects को classify करते हो, जब आप exponential data set के साथ deal करते हो, at that point of time we come up along with this problem of classification, and at that time we can use random forest. If we can be used for both classification and regression problem, then it is basically based on the concept of assemble learning. Assemble learning का क्या मतलब होता है? जब हम एक या एक से ज्यादा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या प्रॉब्लम डेटा सेट के साथ काम करते हैं, उस टाइम पे हम assemble learning phase पे होते हैं. When we talk about random forest for classification, it has got one of the most powerful and versatile, which actually grows and combines with multiple decision trees. And this multiple decision trees is used to create a new forest. It can be used in both the languages like Python and R. Basically, R stats के साथ deal करता है, but when we talk about measure of central tendency, measure of dispersion, at that time we use random forest. In a random forest, majorly multiple decision trees को create करके अलग अलग different या random subsets के साथ हम उसको merge up करते हैं, और ये random subset किसी भी data या किसी भी feature के साथ connect होता है. Actually, random subsets carry or is actually a container of data and features. When we talk about random forest for regression, we are actually using bagging techniques. Bagging techniques की मदद से you can easily use the assemble learning methods for regression, right? These trees in random forest, they actually run in parallel. जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी ट्री के नोड आपस में इंटरेक्शन या इंटरैक्ट मेथड का यूज नहीं करते हैं. There are no interaction between these trees while building the trees. As I have already told, random forest is a supervised learning algorithm, and yes, it uses assemble learning. And रिवाइजिंग अगेन, असेंबल लर्निंग एक मेथड है जो कि एक टेक्निक को कंप्लीट करने में यूज करता है, वेयर वी कंबाइंस द प्रेडिक्शंस फ्रॉम मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जस्ट टू मेक मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शन देन अ सिंगल मॉडल. When we talk about application,
क्लासिफिकेशन का जो एप्लीकेशन है हम बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं, लाइक मेकिंग प्रेडिक्शंस ऑन द मोड्स ऑफ क्लासेस एट द टाइम ऑफ मेडिकल डिग्नोसिस, क्रेडिट कार्ड स्कोरिंग। आप कस्टमर चर्न प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। यू कैन easily classify the objects or particular image. You can easily do the remote sensing work. Okay, it has got one of the most biggest utility in fraud detection. आज की डेट में जब हम सोशल मीडिया सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्स, डिसलाइक्स, मैक्सिमम कमेंट्स, वी यूज रैंडम फॉरेस्ट। ई कॉमर्स के जितने भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस हमें अमेजोन से मिलते हैं, दे आल्सो यूज द ई कॉमर्स रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। ये मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटी रिकॉग्नाइजेशन भी रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम का यूज करते हैं। When we talk about application of regression, we are actually making predictions on the term of modeling, right? जब हम predictive model बनाते हैं finance में, जब हम real estate के price prediction कर रहे हैं, जब हम forecast कर रहे हैं of demands and energy consumption, जब हम forecast कर रहे हैं कि हाँ ये medical application या appliances के हमें uses हैं, when we are forecasting the weather, when we are forecasting the quality control in manufacturing and even in sales, मोस्टली कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू प्रिडिक्शन भी हम रेग्रेशन की मदद से कर सकते हैं। So when we talk about association with classification task, we basically deal with random forest and regression. Random forest में एक बहुत ही useful word है optimizing hyperparameters. Now what is it? जब हम machine learning models build करते हैं, we actually deal with lots of parameters on which we need to judge something, like we can talk about assemble learning method. अब assemble learning method में क्या हो रहा है, हम एक से ज्यादा प्रॉब्लम में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम मल्टी लैटिट्यूड्स पे काम करते हैं, है ना, डिसीजन ट्री के मल्टी लैटिट्यूड्स से। तो एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग एंड आउटपुटिंग द क्लास, इट इज दैट मोड ऑफ क्लास जहां पे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को मीन प्रेडिक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। इस टेक्निक को या इस क्रूशियल स्टेप को हम ऑप्टिमाइजिंग हाइपरपैरामीटर कहते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है which comes at the time of assemble learning, that is feature importance, and it is both responsible for your classification and regression. ठीक है, अब अगर आपको मेन फीचर की बात करनी हो रैंडम फॉरेस्ट की, तो ये एक्चुअली में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है हमारे फीचर्स को, है ना। एंड रैंडम फॉरेस्ट बेसिक वर्क ऑन गेनिंग इंपॉर्टेंस, मीन डिक्रीज इन एक्यूरेसी एंड फीचर इंपॉर्टेंस स्कोर्स। जब हम रैंडम फॉरेस्ट को ऑप्टिमाइज करते हैं, वी एक्चुअली डील विद एस्टिमेटर्स व्हिच आर नंबर ऑफ ट्रीज. We deal with maximum depth, which is the tree depth, number of nodes we are traversing. We are dealing with minimum sample split or leaf sample split. We have 4 more features, that is subset size, bootstrap samples, randomness, out of bake, and yes, cross validation functionality. जब हम इसके फ्यूचर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये हेल्प करता है मुझे इंटरप्रेट करने में, ठीक है, स्केलेबल है, and it is okay, it is one of the most efficient way to make interpret more easy. One of the biggest achievement so far we have gone through is AutoML integration, जहाँ पे it actually handle the data imbalancing. हाइब्रिड मॉडल्स में बहुत काम आता है, आप असेंबल वेरिएंट्स को क्लाउड काउंट कर सकते हो, डोमेन स्पेसिफिक है, डायनामिक एंड अडेप्टिव है, और ये किसी भी ट्रांसफर लर्निंग को रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम की मदद से ट्रांसफर लर्निंग को असेंबल लर्निंग में कन्वर्ट कर सकता है। So that's all for today. Thank you for all for watching this channel. Say Jananand.